आज फिर पढ़ेंगे हम लोग ब्लड कैंसर के बारे में। तो ब्लड कैंसर का बहुत सारे डिजीज का एक समूह है, ग्रुप है। तो हमने ल्यूकोमिया के ऊपर पढ़ा, अब आ रहे हैं हम लोग लिम्फोमा के ऊपर, उसको मायलोमा, फिर एमडीएस एंड एमपीएन के बारे में। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग लिम्फोमा के बारे में। ब्लड कैंसर, लिम्फोमा। लिम्फोमा को भी ब्लड कैंसर ही बोला जाता है। लिम्फोमा क्या है, पहले इसको समझो। लिम्फोमा इज ए टाइप ऑफ कैंसर दैट अफेक्ट द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ ग्लैंड सब इसमें स्वेलिंग रहेंगे, विच इज पार्ट ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम। It originates into the lymphocyte, a type of white blood cell that helps to fight the infection. Lymphoma can occur in the lymph nodes, spleen, bone marrow, and other organs of the lymphatic system. समझ में आया? Generally, there is two type of lymphoma. One is Hodgkin's lymphoma, HL, characterized by the presence of the red Sternberg cells. It often starts with a single lymph nodes and spread into orderly fashion. Second was the non-Hodgkin's lymphoma, a more common type of the many subtypes. It can be spread in non-linear pattern and vary in aggressiveness. Symptom of lymphoma आपको क्या मिलेंगे? Swollen and painless lymph nodes, neck, armpit and groin region. तीनों रीजन में स्वेलिंग हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, वेट लॉस का कोई कारण नहीं है। परसिस्टेंट फीवर, नाइट स्वीट, फैटिग एंड इची स्किन। ठीक है। अब होम्योपैथिक अप्रोच ऑफ द लिम्फोमा। फर्स्ट, आर्सेनिक एल्बम फॉर इंटेंस वीकनेस एंड एंजाइटी एंड बर्निंग पेन। सेकंड, मेडिसिन इन कैलक्रिया कार्ब यूजफुल इन ग्लैंडुलर स्वेलिंग, एक्सेसिव स्वीटिंग एंड फैटिग। Lacopril for digestive disturbances, bloating and right-sided lymphatic involvement. Carcinogen, a deep active remedy from the open indicated in cancerous condition. Now I have ferrum picric, pseudoleukemia, that is any abdominal states, that is Hodgkin's lymphoma, resembling leukemia, in its anatomical changes but lacking the changes in the circulating blood characteristics of the latter lymphatic involvement alone. Anemia is marked. Ferrum picric is almost cases. Ferrum picric में एनीमिया हर जगह रहेगा। Netten cell, spleen and lymphatic leukemia. In severe cases, there is no family history of the past medical history with sudden jerk of the diagnosis of the leukemic disorder. Clinically, patient has a marked B symptoms with bone pains and red line symptom progressive disease cases. ठीक है। अब स्क्रोफिलिया नोडोजा, नोटेड फिगवर्ट। Scrophularia nodosa is well known for homeopathic remedy for lymphatic swelling and glandular affections. Indicated in a hard nodular tumor, especially in the neck and breast region. Used for indolent, slow-growing lymphoma with painless but the enlargement of the lymph nodes. Helps to absorbing glandular swelling and is reducing hardness in the lymphatic area. Absorbing the glandular swelling को absorb करता है, reduce the hardness of the lymphatic condition. May relieve skin eruption and ulceration associated with lymphatic disorder. Cistus canaris, especially used in chronic and sclerosis tubercular condition of the lymphatic system. Indicated in hard swelling and lymph nodes, particularly in the neck and under the jaw. Beneficial to cold sensitive individuals who feel worse in winter. Help in skin affections, ulcer and abscess linked together. To glandular swelling, usually in throat infection, tonsillar swelling and chronic catra associated with lymphatic dysfunction. Thank you. वीडियो आपको कैसा लगा? हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.